Hello friends, welcome to your favorite channel Dream Teachership. Friends, जदि टार्गेट सीटी B.Ed किंबा TET, TGT, OAVS किंबा जे कोनोसी स्कूल रो टीचर हबा पाई जदि टार्गेट अछि ताहले निश्चय ए चैनल को सब्सक्राइब करी साइड रो बेल आइकन को दबाई नियो सो दैट मोर सब लाइव एंड अपलोडेड वीडियोज देखि परिबो. फ्रेंड्स, आज रो सेशन रे हमें डिस्कस करिबा टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर सीटी B.Ed 2021 एंड ता सहित TET, TGT बा OAVS पाई जो माने एस्पायरेंट्स अछंती सेमानक पाई ये सेशन बहुत हेल्पफुल होबा को जाउची. फ्रेंड्स, ताहले विलंब न करी स्टार्ट करिबा. फ्रेंड्स, मो अनअकैडमी रे मध्ये एजुकेटर अछि. अनअकैडमी एजुकेशन इंडिया रो लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ये. तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली या थ्रू रे एजुकेटेड हबा इजीली एंड आज ही अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करिबा प्ले स्टोर रु. एंड फ्रेंड्स, अनलॉक करिबा को यूज करिबो चिन्मय सर ये रिफरल कोड को पुट करिबा द्वारा फ्री क्लासेस आराम से करि परिबा. एंड फ्री क्लासेस सहित जदि प्लस सब्सक्रिप्शन नबा को चाहूछ निश्चय यही रिफरल कोड को यूज करी प्लस सब्सक्रिप्शन नबो जदि ताहले 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिली परिबो. एंड फ्रेंड्स, गोल्ड रे एप्लीकेशन को डाउनलोड करा पर गोल्ड रे ओपीएससी सिलेक्ट करिबा एंड सर्च करिबा चिन्मय महापात्र एंड फॉलो करि नबो. एंड आज ही डाउनलोड करो अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. ओके, सो डिस्कस करिबा किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को फोकस करिछि आज रो सेशन रे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी देखिबा. ह्यूमन डेवलपमेंट is divided into domains such as, so what are the different domains, to which different domains human development is divided. तो यार राइट आंसर हुई फ्रेंड्स डी माने साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल डोमेन्स. ह्यूमन डेवलपमेंट को ए चारिटा डोमेन रे डिवाइड करा जाय. क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म दैट डज नॉट कोइंसाइड विथ द स्टाइल ऑफ लर्निंग. स्टाइल ऑफ लर्निंग सहित कोइंसाइड जोटा करूनी सेटा होची रोट लर्निंग या अगेंस्ट रे. हमें रोट लर्निंग माने हला मेमोराइज एंड मेमोराइज करबा अगेंस्ट सब बळे हमें कांसेप्ट कंक्रीट नॉलेज पाई कांसेप्ट को बुझीबा. सो इट इज नॉट, यस, नॉट रोट लर्निंग. क्वेश्चन नंबर 3, स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स should be taught along with the normal student. It implies, so समझते all in a single campus. This is the target of inclusive education. So the right answer is inclusive education where disadvantaged group ro learner का सहित normal students माने भी मिसी की पढ़िबे. Question number 4, when a child with a disability first comes to school, the teacher should. यदि first जने disabled child school को आसले, then what should the teacher do? What is the role of the teacher? The right answer is D, discuss with the children's parents to evolve cooperative plans. So the teacher should discuss with the parents. Child रो जो disabled child तार parents का सहित discuss करिकी गोटे cooperative atmosphere बनेबे that will help the child for his or her utmost development. Right? Okay. Next one, which one is not an element of intellectual development? So here the right answer is tolerance. Tolerance is not an element of intellectual development, not an element. Thinking, creativity and imagination are important components, elements of intellectual development, but not tolerance. Long term memory is through. Long term memory definitely एबे टिके पूर्व को बतले हमें जदि मैक्सिमम सेंस ऑर्गन को यूज करिबा रोट मेथड द्वारा केबे भी हबनी. लॉन्ग टर्म मेमोरी मेमोराइजिंग द्वारा हुए नहीं, हुए लर्निंग बाय मल्टी सेंसोरी ऑर्गन्स. ओके, विजुअल, रीडिंग, लिसनिंग, ओके, एक्सपेरिमेंटेशन, ये सबु जिंस जते अधिका सेंस ऑर्गन्स हमर यूज हबो, इन्वॉल्व हबो, सेते भलो लर्निंग हे परिबो और लॉन्ग टर्म हे परिबो. हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइजेस. कहा को एम्फसाइज देथिले गार्डनर. सो यार राइट आंसर होची द यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल. सबु इंडिविजुअल रो एबिलिटीज को इंपोर्टेंस देथिले गार्डनर. सेति पई तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कार कोठी टिके कम थाई पारे बट डेफिनेटली इंटेलिजेंस को क्षेत्र रे निश्चित अधिका थिबो. तो यूनिक एबिलिटीज अछि सबु इंडिविजुअल रो. Vygotsky proposed that child development is, right answer is C, a product of social interaction. Vygotsky सब बड़े social constructivist approach of Lev Vygotsky हमें जानी चाहिए. सोसाइटी को इंपोर्टेंस दियंती, social constructivist and society रे ही construct हुए knowledge, a product of social interaction. Question number 9, gender discrimination in a classroom.
तार प्रभाव कौन रहिबो द राइट आंसर होची मे लीड टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मे लीड टू diminished effort or performance of the student so the ame discriminate kariba boys girls boys bhitere then gender discrimination definitely effort ku kamai dabo performance ku kamai dabo students so we should not be gender bias right okay we should not create gender bias question number 10 the teacher noticed that Pushpa cannot solve a problem on her own निजे सॉल्व करी पारुनी पुष्पा गोटे प्रॉब्लम को हाउएवर सी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट और पीयर गाइडेंस बट से सॉल्व करी पारुची जदि ताकू केही जणे गाइड करूचंती मे बी मोर नॉलेजेबल अदर केही अधिका जानिथिबा लोको एडल्ट्स हुंतु पीयर हुंतु निज फ्रेंड्स हुंतु जदि गाइड कले ताहले सॉल्व करी पारुची व्हाट इज दैट डेफिनेटली द प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग होची सेही प्रोसेस जा द्वारा किए जदि गाइड करूछंती माने कर गोटे पिला एई लेवल जाय सॉल्व करि पारुची गोटे प्रॉब्लम को बट गाइडेंस द्वारा ही और सी कैन गो अप टू दिस लेवल सो ए गाइडेंस द्वारा जो इंप्रूवमेंट होची जो प्रोसेस ऑफ गाइडेंस ताकू कहा जाउची स्कैफोल्डिंग एंड दिस पर्टिकुलर जोन जति की जोन को सी कवर कला ए जो जोन टा जो एक्स्ट्रा तारो इंप्रूवमेंट हे परला ताकू कहा जाउची जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट फ्रेंड्स सो zone of proximal development which is called as ZPD. Okay, next question, deficiency in the ability to write associated with what? Ability to write jodi achi friends ame jiba dysgraphia सहित and dyslexia hale words pronunciation understanding रे problem dyspraxia hale मोटर कोऑर्डिनेशन रहिबनी ठीक रे एंड डिस्कैलकुलिया होची मैथमेटिकल कैलकुलेशन रे प्रॉब्लम जदी रहउची सो क्वेश्चन नंबर 11 रो राइट आंसर फ्रेंड्स डिस्ग्राफिया राइटिंग सहित रिलेटेड ओके फ्रेंड्स जदी अनअकैडमी प्लस जॉइन करनो प्लस रे जॉइन करिवा पई बहुत कम अमाउंट पे करके जॉइन करि परिबो एंड फ्री क्लासेस पई मध्य अनलॉक करिवा पई यूज करो मोर रेफरल कोड चिन्मय सर सो दैट एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिली परिबो एंड फ्री क्लासेस पई अनलॉक करिवा पई भी आकु यूज करि परिबो फ्रीली क्लासेस करि परिबो अनअकैडमी रे क्वेश्चन नंबर 12 टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हिज क्लासरूम ए टीचर शुड सो इंडिविजुअल डिफरेंस को मीट करिवा पई कोन करिवे टीचर सो एंगेज सी इज द राइट आंसर एंगेज इन ए डायलॉग विथ स्टूडेंट्स एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव्स जेहेतु टीचर जानते जे इंडिविजुअल डिफरेंस इज individual child has unique abilities unique potential unique need तेणु से सब जिनस को फिल करबा पई फिल अप करबा पई एंगेज हेबे इन डायलॉग्स विथ स्टूडेंट्स एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव समस्तन को इंपोर्टेंस देबे समस्तनकर मत को वैल्यू देबे इन ऑर्डर टू अवॉइड जेंडर स्टेरियोटाइप इन ए क्लास ए टीचर शुड सो जेंडर रो सब जेंडर को इक्वाली देखिबा पई को टाइप रो क्लासरूम रे टीचर हबा दरकार So 13 रो आंसर होची try to put both boys and girls in non-traditional roles. Non-traditional roles माने specific नुह जे girls माने एई जिंस करिवे boys माने एटा करिवे we should not differentiate them on the basis of the work done. समस्त को समान हमें opportunities दबा समान work दबा so non-traditional roles दबा जोटा कि traditional नुहे केवल boys पाई specific किंबा girls पाई specific नुहे okay नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 14 सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट सो इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूजन पाई समस्तन को मिसेइबा पाई एकाठी करिबा पाई कोटा दरकार नाही तो सेग्रीगेशन राइट आंसर काहे कि सेग्रीगेशन द मीनिंग हला सेपरेशन वी शुड नॉट सेपरेट देम राइट ओके क्वेश्चन नंबर 15 गिफ्टेड स्टूडेंट्स नीड सपोर्ट नॉट ordinarily provided by the school रे ordinarily provide करा जाऊ नथिबा भलिया सपोर्ट मध्य दरकार गिफ्टेड स्टूडेंट्स मान को स्पेशल अटेंशन दरकार ये भी टिके कंफ्यूज करि पारे फ्रेंड्स डी कैन बी गुड मॉडल्स फॉर अदर स्टूडेंट्स हां वे तो से माने अदर स्टूडेंट्स पई गुड मॉडल हे पारंती बट आज ए टीचर हमें भाबिबा तांकू एक्स्ट्रा सपोर्ट दरकार तांकर नीड को फिल अप करबा हमें बी सेति पई राइट आंसर हबो डेफिनेटली तमनकर मत तमे कमेंट बॉक्स रे निश्चय मते दबो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जदि कौन से क्वेश्चन रो आंसर आउ किछि हबो बोली तम माने भाबुछ निश्चय कमेंट बॉक्स रे मत दबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा फ्रेंड्स
what was Frobel's most important contribution to education? So definitely Frobel is associated with KG, kindergarten system of education. So KG is the right answer, kindergarten. Question number 17, readiness for learning refers to. Readiness for learning. What do you mean by readiness for learning? It is B, present cognitive level of students in the learning continuum. So how they are prepared to learn, readiness. So what is the level of their mental development? Are they ready to receive the thing that is provided to them? Are they mentally fit? Are they actually ready? Say jinsota. Anyway, IQ scores are generally dash correlated with academic performance. So IQ definitely ये IQ जदि भल अच्छी ताहले academic performance भी भल रहे. So definitely आमे कहिबा highly. IQ scores are generally highly correlated with academic performance. The philosopher who for the first time mentioned the importance of play or sports in education was. So education रे sports को first time mention कला वाला होचंदी Aristotle, right? Greek philosopher Aristotle, father of political science, zoology, biology, right? Anyway, the emphasis from teaching to learning can be shifted by teaching ru emphasis टाकू teaching ru कोठी की shift करिवार अछि learning को. So it is done by what? Adopting child centered pedagogy. Definitely आमे जदि child centered education provide करिबा, child system, child centered education दबा ताहले definitely teaching ru learning को importance अधिका दिया जिवो, right? Next, difficulty in recalling sequence of letters in words and frequent loss of visual memory is associated with. So ए जिनस मु टिके पूर्वरु डिस्कस करथली गोटे क्वेश्चन ए रिलेटेड मध्य थिला जोठी कि सब टर्म को मु डिस्कस करथली. So here the answer will be dyslexia. Okay, dysgraphia was there in the previous question जोठी कि writing disability थिला. Dyspraxia मु कहली motor skill रा disability, dyscalculia mathematical calculation रे problem, and dyslexia होची words frequent loss of visual memory. According to Emil, the noble work in education is to make a and what good citizen, and Emil was written by Rousseau. Okay, Rousseau लिखिथिले Emil book, and Emil जो notable work education रा ये focus करिथिला children माननकु education through a good citizen बनेबा. Which one does not indicate child's emotion? Child emotion को कोटा indicate करे नहीं. Does not indicate child's emotion is tolerance. Curiosity, pleasure and sorrow are emotions of child, but tolerance is not the emotion, not an emotion. According to Piaget's stage of cognitive development, the sensory motor stage is associated with. So sensory motor stage means 0 to 2 years, and it is definitely associated with imitation. Children माने बहुत छोटो छुआ माने imitate करंती, memorize करंती, mental representation, different type of facial expression, smiles, crying, ये सब जिनिस. And what is the stage from 2 to 6 years called? 0 to 2 तमु कही देली sensory motor, but what about 2 to 6 years? It is, my dear friends, pre-childhood. Pre-childhood 2 to 6 years. So these are some of the most important questions of teaching aptitude. Do the universe a favor. Don't hide your magic. Each and every individual has magical powers. So we need to expose them, express them. We should get the best out of ourselves. So definitely, we should give our best, and we should be creative, and definitely हमें universe को favor करिबा निहाती दरकार. जोठु हमें रहीचे, जोठु हमें सबु जिनस पाउचे तापई एति की फेवर करिबा, हमर जो क्वालिटीज अछि ता द्वारा निश्चय ताको एक्सप्रेस करिबा और समस्तकर उपकार करिबा. Thank you very much for your active participation, my dear friends. Do not forget to subscribe and hit the bell icon so that सबु notification all videos रा पाई परिबो. Don't forget to like, comment and share. Thank you very much. Have a great day. पुणी देखाबा आउ गोटे सेशन रे तमनक सहित इंटरैक्ट करिबा, and definitely subscribe करिकी साइड रो बेल आइकन निश्चय दबाओ, and maximum फ्रेंड मानक सहित शेयर मध्य करो. Thank you very much. जय जगन्नाथ.